नमस्कार, मनी 9 के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान और आप देख रहे हैं मनी मांग का एक खास एपिसोड मुंबई में आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के दफ्तर से सीधे। और मेरे साथ हैं आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ए बालासुब्रमण्यम। अगर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्रिकेट होती तो शायद बाला सुनील गावस्कर होते। अगर आप मुंबई की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आते जाते लोगों से मिलते हैं तो घूमते फिरते आपको आधे घंटे के भीतर कोई ना कोई ए बालासुब्रमण्यम का नाम ज़रूर बता देगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उनकी साख, उनकी छवि और उनके फैसलों को लेकर। और ख़ास तौर पर आज हम उनसे उनके दफ्तर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं, ढेर सारे। सेबी की तरफ से लिए जा रहे फैसले, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शिकायतें ओवर रेगुलेटेड होने की, म्यूचुअल फंड निवेशकों के दिमाग में तमाम तरीके के सवाल, कई तरीके की स्कीमें। लेकिन ये सारे कठिन सवाल से पहले हम शुरू करते हैं बाला सर के स्वागत के साथ। एंड वी वुड लाइक टू स्टार्ट दिस डिस्कशन विद अंडरस्टैंडिंग दिस वन फाइन मोमेंट ऑफ योर जर्नी वेयर you say that you've seen a complete turning point in your entire career as a mutual fund expert and then chief executive officer and chief investment officer in the capital markets. अंशुमन जी, मनी 9 को बहुत बहुत धन्यवाद टू हैव मी पार्ट ऑफ द शो टुडे। आप सुनील गावस्कर के बारे में बात कर रहा था। ऑफ कोर्स आई वर्क विद हिम क्लोजली इन वन ऑफ द सोशल सर्विस एक्टिविटीज़। और उनका और मेरा और कंपेयर बिल्कुल इज़ लाइक आसमान ज़मीन का डिस्टेंस जैसा है। ही इज़ समबडी इज़ बिग अचीवर। बट अब जो हम लोग जो म्यूचुअल में काम किया है, छोटा छोटा काम किया है, बट एक ही काम अच्छा काम किया है, म्यूचुअल में टिका हुआ एक्चुअली 30 साल में टिका हुआ एक्चुअली। दैट इज ओनली थिंग दैट यू हैव डन। जो आप जो पहले पूछ रहा दैट द टर्निंग पॉइंट, मेरा हिसाब से टर्निंग पॉइंट आदित्य बिरला साल म्यूचुअल फंड में ज्वाइन किया था इन द ईयर 1994 आफ्टर द हर्षवर्धन स्कैम। सो आफ्टर हर्षवर्धन स्कैम कैपिटल मार्केट कॉन्फिडेंस बहुत कम था। सो तभी ये प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड अपना देश में आना शुरू हुआ था। सो आई जॉइन दिस फर्म इन 1995 बिगिनिंग में। मेरे हिसाब से दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम ए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक बीइंग पार्ट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप इन द कंट्री विच इज़ आदित्य बिरला ग्रुप। सो मेरा हमेशा मेरा पिताजी से और माता जी से सुनता था एक्चुअली, पर कोई काम करना होगा तो बिरला टाटा में काम करना टाइप्स, वो पुराना ये सबका एक इरादा था सबका। सो देयरफॉर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, जॉइंड आदित्य म्यूचुअल फंड बिगिनिंग में। दूसरा टर्निंग पॉइंट था ऑन दी जो शेप, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शेप हुआ था। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में पहले म्यूचुअल फंड का समझाने के लिए बहुत टाइम लगते थे। हम लोग जो पहले जो हार्ड वर्क जो करते थे, हर एक्सचेंज पहले ज़माने में there is an exchange in Baroda, there is an exchange in Visakhapatnam, there is an exchange in Vijayawada, there is an exchange in Delhi, there is an exchange in Chennai। हर जगह पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, बात करने के लिए जाते हैं। सो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। सो दैट समथिंग बिकम ईजी। जो टर्न अराउंड जो किया था इमीडिएटली आफ्टर दी डिमांड, जो प्राइम मिनिस्टर की जो डिमांड, जो नोटबंदी जो किया था, उसके बाद जो म्यूचुअल फंड सही है हम लोग लॉन्च किया था। I think these two are the big turnaround point for the mutual fund industry as a whole। बिरला साल म्यूचुअल फंड भी तभी टर्नाराउंड था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के भी तभी टर्नाराउंड था, तभी जानकारी बहुत बढ़ गया था। सो these are the two instances I can see for me personally। जो कैरियर को जो पहले आया, how we started then how we took off। the industry का टर्नाराउंड जो आया द 2016 में जो हुआ था। बट ड्यूरिंग दिस टाइम I think the bigger challenging and turning point is actually how you manage things। जो क्राइसिस का टाइम पे, जो अचानक जो क्राइसिस आ गया है, एक्सीडेंट आ गया है इंडस्ट्रीज़ में, बट ग्लोबल मार्केट में कुछ एक्सीडेंट आ गया है, विच इज़ नथिंग बट कोलैप्स इन लेमन ब्रदर्स इन 2008। जो सही जो मालूम पड़ा दैट आपका जो स्ट्रेंथ जो है वो कभी मालूम नहीं पड़ता है। आप क्राइसिस मैनेज करते हैं, जो अपना खुद का स्ट्रेंथ, ब्रांड का स्ट्रेंथ, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड स्ट्रेंथ जो एकदम अच्छा तरफ से मालूम पड़ा, द वे वी मैनेज क्राइसिस सिचुएशन 2008। सो तभी मालूम पड़ता है। आई थिंक सही जो डायमंड जो शाइन होकर निकलते हैं इज़ नॉट ऑन द परफॉर्मेंस अलोन, इज़ अबाउट हाउ वी मैनेज क्राइसिस। सो 2008 जो मैनेज क्राइसिस हुआ, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस में, फाइनेंशियल मार्केट में सब लोग का डर था एक्चुअली पूरा फाइनेंशियल मार्केट बंद हो जाएंगे। सो तभी जो बीइंग एट द टॉप ऑफ द जॉब
जो रोज को रोज मॉनिटर करके जो क्राइसिस मैनेज करते हैं, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अनदर टर्न अराउंड टाइम इन टर्म्स ऑफ नोइंग योर स्ट्रेंथ बेसिस में आपको जो आगे बढ़ते जाना चाहिए। सुनील गावस्कर का जिक्र मैंने जानबूझकर किया। सुनील गावस्कर को इंडियन क्रिकेट में उस कंसिस्टेंसी के लिए, टिकने के लिए जाना जाता है, और म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी सिखाया जाता है कि आपको 2020 के बजाय कंसिस्टेंट होकर टेस्ट प्लेयर की तरह प्ले करना चाहिए। एंड बाला सर दोनों तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लंबा समय बिताने के साथ, आदित्य बिरला समूह के साथ लंबा समय बिताने के साथ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी लर्निंग है, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए जो सबसे बड़ी लर्निंग है कि लंबे समय तक टिके रहने का, ये पूरा मेटाफर सुनील गावस्कर का उसके साथ शुरू होता है। इसलिए हमने जानबूझकर उसका जिक्र किया था। और आज हम इस चर्चा में बाला के अपने एक्सपीरियंस से, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अपने एक्सपीरियंस से हम एज ए इन्वेस्टर क्या समझ सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैसे समझ सकते हैं, इसकी तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बाला सर, when you referred about 2008 crisis, mutual fund investors are not as much as sort of risk proof as other investors are there. They always see their NAVs going down. And how you managed the 2008 crisis, any specific incident or example you want to give us, because that will tell the investors, those who might see a वॉलिटिलिटी इन द मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अचानक लगता है मार्केट गिरा, 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिरा, और उसने अपने मोबाइल ऐप के ऊपर देखा कि एक दिन में उसके 15-16 हज़ार रुपये, 17-18 हज़ार रुपये रेड हो गए, और उसको ये समझ में आता कि मैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता ही नहीं, मेरा क्यों नुकसान हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, आई एम लूजिंग मनी, स्टॉक म्यूचुअल फंड हैज कमिटेड दैट विल गिव द रिटर्न। सो दिस इंटायर मैनेजिंग दैट part of the risk, how a fund manager thinks, because the fund manager thinking is in a way is thinking of investor also, he is also resembling the investor's thinking. So how did you manage this 2008-9 scenario? Some important incident or example if you can suggest on that. Yeah. So I think 2008 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, as you rightly said. एक तरफ से मार्केट में इम्पैक्ट है, एक तरफ से इक्विटी मार्केट में लोअर सर्किट रख गया था जी, अगर किसको माल बेचना बेच नहीं सकते, मार्केट बंद हो गया। वी हैड वन डे लोअर सर्किट लग गया था, उसके बाद मार्केट और नीचे गिरा। दैट्स समथिंग यू हैव सीन, देयर आर 2 times इन इंडिया वी हैव सीन। यस, बट व्हेनेवर मार्केट फॉल्स शार्पली, आप कुछ भी कर नहीं सकता है, आप पैनिक हो सकता है और माल बेचने के लिए कोशिश कर सकता है, आप कुछ भी एफर्ट डाल रहे हैं उसका आउटकम जीरो आएंगे। देयरफॉर यू हैव टू रिमेन कूल, क्योंकि आप एक दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 2 दिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इज इरेशनल बिहेवियर मार्केट, मार्केट ऊपर जाने के टाइम इरेशनल बिहेवियर रहेगा और नीचे आने के टाइम इरेशनल बिहेवियर रहेगा। सो ये दोनों समझ के, सो तभी आपको कूल माइंड रख के जो डिसीजन जो तभी जो लेना है, समटाइम्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो नो एक्शन इज एक्चुअली द बेस्ट एक्शन दैट यू कैन हैव। सो दैट इज टाइम वी रियलाइज्ड आपको कभी भी ऐसा इंसिडेंट आ सकता है, उसके लिए जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो करना है, जो लिक्विडिटी समझ के, जो स्टॉक जो ओनिंग करते हैं, जो सिक्योरिटी जो ओनिंग करते हैं, उसका कभी कोई भी टफ मार्केट में भी उसको आप बेच सकते हैं, नहीं बेच सकता है, वो समझ के वो बेसिस में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। दैट्स वन ऑफ द की लर्निंग केम। थर्ड आई थिंक की लर्निंग फ्रॉम दैट इज द इन्वेस्टर्स किधर पैसा डाल के बैठा है एक्चुअली बाहर, उनको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कैसे मार्केट कैसे ऑपरेट कैसे करते हैं। तभी एंगेज करना है, कस्टमर से एंगेज करके उनको समझाना है। एक्चुअली आप थोड़ा समय देगा तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, देयरफॉर आपको समय देने से आपको फायदा होएगा rather than panicking. Therefore, ensure handholding of customers. That's something we have to do on in fixed income product. FMP जो कभी लोग निकालने की कोशिश करते थे, हर जन को फ़ोन करके हम लोग बोलते थे एक्चुअली आप बिल्कुल पैनिक मत दो, निकालो मत, एक्चुअली पोर्टफोलियो अच्छा है, आज 2 दिन के लिए आप शायद आपको थोड़ा पेन कैरी करना पड़ेगा। Sometimes what happens in the stock market, the pain is always follows with the big gain. Yes. वो समझ के one of the biggest learning is every pain followed by the good gain, every gain would followed by small pain. So वो आपको दोनों तरफ से समझ के मार्केट में टिका हुए रहते हैं। I think that's something you'll do. That maturity I could see in 2009 में, जो the way I used to measure investors का जो behavior. So amateur जो लोग पूछते रहते हैं इन्वेस्ट करना है रिडीम करना है। So अगर जो सवाल जो पूछते हैं इन्वेस्ट करने का सवाल ज़्यादा है वर्सेस रिडीम करने का सवाल ज़्यादा है, दैट नेचुरली दैट मीन्स सबको मूड इन्वेस्ट करने का मूड है। दैट्स वे आई मेजर इट। सो द 2009 में जो लोग पूछते थे सर अभी क्या करना है, सर पैसे लगाना है, क्या करना है, सो आई यूज्ड टू थिंक दैट आई यूज्ड टू सी द इन्वेस्टर मैच्योरिटी लेवल बढ़ी है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। धीरे धीरे करके जो म्यूचुअल फंड का जो इम्पोर्टेंस है
that they can play a role in everyone's savings in the long run is something was a bigger learning in 2009 crisis. So उसके बाद लोग का जो सवाल जाना शुरू हुआ in terms of percentage, इन्वेस्ट करना है सर, कभी इन्वेस्ट करना है, मार्केट गिरेगा, इन्वेस्ट करें, आज नहीं करें, नहीं कल करें. दैट इटसेल्फ माय व्यू इज अ बिग माइंडसेट चेंज. उसके लिए बहुत कम्युनिकेशन करना पड़ा, रिस्क मैनेजमेंट भी अपना जो करना पड़ा, तो कॉन्फ्रेंस बूस्ट करना पड़ा. रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कर लेंगे, बट लोग को जो समझा के कॉन्फ्रेंस बूस्ट करना है वो जरूरी होता है. That's something we all. So who became more matured now from 2009 to 2022? Fund managers or investors? Investors became more matured. दोनों matured है. Investors को matured हो गया क्योंकि उनको मालूम है एक्चुअली मार्केट ऊपर नीचे चलते रहेंगे. बट मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ. इसके लिए पहले जो पैनिक जो होता था, because that time everything was unknown. When you deal with unknown, what you can best do is panic. Nothing you can do. Yes. But my view is when there are too many unknowns are there, the best thing to be remain cool. तो वो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटीज बहुत अच्छी तरफ से आया एक्चुअली. फंड मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप कुछ भी करो, एज योर साइज बिकमिंग लार्जर, जो रिस्क जो बैकएंड में रिटर्न वर्सेस रिस्क में क्या फोकस करते हैं. पहले आप खाली रिटर्न में फोकस करके रिटर्न ज़्यादा बढ़ा सकता है, बन भी सकता है, उसका साथ साथ में रिस्क भी आता है. वो एक्चुअली फंड मैनेजर्स को जानकारी बहुत आएगा. जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं उसमें रिस्क भी आपको लेना है, रिटर्न भी जनरेट करना है. जो रिस्क जो लेते हैं उसका equal proportionate return अगर नहीं आया, whether the risk is worth taking or not worth taking risk, that fund managers आज के दिन पे उनका भी maturity levels जानकारी बहुत बढ़ गई है. उसमें मैं इनको भी तारीफ करेंगे. उसमें their regulation जो साथ साथ में चेंज होते रह रहा था, that also has played its role. रेगुलेशन का तो चेंज आया और उसके हिसाब से मनी मैनेजर्स को भी अडाप्ट करना पड़ा. एंड रिस्क मैनेजमेंट ईच फंड हाउसेज में, फंड हाउस लाइक ABSL म्यूचुअल फंड, आज के दिन पे मेरा इक्विटी और फिक्स्ड इनकम टीम मिलके 55 पीपल आर देयर. वो उसका साथ साथ में मेरा कंप्लायंस और रिस्क में अगर देखते हैं 50% ऑफ द स्टाफ कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट. उसका मतलब जो रिटर्न के जो हम लोग जो फोकस करते हैं उतना इक्वल फोकस मेरे को रिस्क मैनेजमेंट फोकस करना है. क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि एक तो इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू ग्रो. मेरे हिसाब से बैंकिंग इंडस्ट्री जैसा वो बढ़ते जाएंगे ऊपर. लोग का जो समझदारी इतना बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स निवेश का जो इन्वेस्टर्स का हो रहे हैं वो भी म्यूचुअल फंड बढ़ते जाएंगे. तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट का भी इक्वली इंपॉर्टेंट दैन कंपेयर टू रिटर्न जनरेशन. I'll come to the regulation. First, I'll ask a personal question. Do you invest in mutual fund? 100% इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ. 100% investment of your in mutual fund. And what is equity and debt? What is your ratio? मेरा जो नेट टेकम जो आता है उसमें ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द मनी आई पुट इन म्यूचुअल फंड. इक्विटी में डालता हूँ. मेरा फिक्स्ड इनकम जो मैनेज जो मेरा फिक्स्ड इनकम का असल के हिसाब से जो करना है वो मेरा EPF मनी है. अच्छा. पूरा इक्विटी में मेरे पैसे डाल देता हूँ. क्योंकि इक्विटी में अगर 10 साल 15 साल के लेते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज़्यादा है. आप कुछ भी करके इधर उधर कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली मार्केट इन द लॉन्ग रन is actually always go up. Yes. Now I'm coming to the regulation part. Is that there's two type of challenges which is mutual fund investors are seeing there, and that is where when we see the data, there's only 15% of the financial savings, 14 to 15% financial savings is still limited to the mutual fund industry. A lot of money is parked in real estate, gold, and bank accounts. राइट सेलिंग से ज़्यादा बड़ा चैलेंज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मिस सेलिंग का है. सो once you see that investors are maturing, similarly there's a lot of mis-selling is rising in the mutual fund industry. How do you see this phenomena coming up to the investors which are really not well versed and understand the risk profile of their investment? Correct. See, mis-selling अब कोई भी आप इंडस्ट्री में देखते हैं, there will be good selling, there will be mis-selling, but mis-selling as a proportion, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो प्रोपोर्शन के हिसाब से मिसलिंग आज के दिन पे शायद हो सकता है, मेरे हिसाब से प्रोपोर्शन बहुत कम है. अच्छा. कोई भी इन्वेस्टर्स आज के दिन पे जो ट्रांसपेरेंसी हिसाब से जो म्यूचुअल फंड ऑपरेट कर रहे हैं, अब रोज को रोज NAV देखते हैं एज यूजिंग द प्राइसेस ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइसेस, उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है. तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इन्वेस्टर्स को समझा के उनको इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, all of them are qualified NISM qualified people. None of them actually, कोई भी म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट कोई बेच नहीं सकता अनलेस सेंट्रल क्वालिफाइड AMFI रजिस्टर्ड ARN होल्डर कोई बेच नहीं सकता. इन्वेस्टर को जो डायरेक्ट कस्टमर जो बेचते हैं वो भी NISM क्वालिफाइड पीपल ओनली. देयरफॉर जो पहले जो था ज़माने में पीपल वर नॉट क्वालिफाइड एनफ सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अब अभी नहीं है.
Therefore मिसलिंग किधर हो सकता है, कभी किसको एज के हिसाब से और उनका रिस्क कैपिटल के हिसाब से, अगर समझ लीजिए उनको फिक्स इनकम में पैसा डालना है बट ये में एंड अप इन्वेस्टिंग इक्विटी, सो ये वो हो रहा है, एक हो सकता है, ये हो रहा है। सो ओनली थिंग इज अगर इन्वेस्टर्स को भी अगर पैसा का जरूरी नहीं है, अगर रिटर्न के लिए पैसा डालना है, आप इक्विटी में पैसा डाल के रिटायरमेंट में पैसा डालें, दैट समथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ मिसलिंग। Yes. बट अदरवाइज मिसलिंग का स्कोप इज नॉट अबाउट चीटिंग, सो चीटिंग उतना नहीं होगा, आपका पैसा हमेशा रिमेन सेफ, इज ओनली द क्वेश्चन ऑफ विच प्रोडक्ट टू चूज। दूसरा एक एक्चुअली वेयर पीपल शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड बिल्कुल पैसा नहीं लगाया बट सडनली उनको जाके इन्वेस्ट करना है दी PMS AIF विच बेसिकली ऑपरेट्स इन डिफरेंट पैरामीटर्स, अगर म्यूचुअल फंड बिल्कुल एक्सपोज नहीं किया, उधर का डाल दिया, दिस ऑल्सो समथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ somewhat in the misselling Misselling, side. yes. But otherwise म्यूचुअल फंड में मिसलिंग का स्कोप बहुत कम है, बट ओनली द कस्टमर चॉइस वुड बी डिफरेंट। द पीपल जो सेल द प्रोडक्ट, उनका रिस्क कैपिटल समझ के जो प्रोडक्ट देते हैं उसमें खाली सिलेक्शन का ध्यान रख के करना पड़ेगा, अदरवाइज मिसलिंग इट डजंट हैपन, बिकॉज म्यूचुअल फंड सबको अभी आज के दिन में मालूम पड़ गया है, दो वी वट एवर रिटर्न वी गिव, जो हम लोग जो पैसा कमाते हैं उन कस्टमर का इन्वेस्टर्स का ही है, जो पैसा लूज भी होते हैं वो भी इन्वेस्टर्स का ही है। हाँ, सो देयरफॉर द पास थ्रू सिस्टम जिस हिसाब से जो म्यूचुअल फंड जो बनाया है, एनएवी सिस्टम जो बनाया है, इट इज समथिंग इज ब्यूटीफुली डिजाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें मिसलिंग का बिल्कुल सवाल नहीं उठता है। द मिसलिंग कैन हैपन ओनली इन द वे आई जस्ट एक्सप्लेन्ड अर्लियर। सर स्टिल डिस्पाइट वेरी गुड ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, रिटर्न्स भी अच्छे हैं, मार्केट के ग्रोथ के पोटेंशियल भी अच्छे हैं, स्टिल वी फाइंड दैट ह्यूज पॉपुलेशन इज सिटिंग ऑन द फेंस. What stops them to coming into the mainstream of mutual fund? We'll still see 3.5 crore active SIPs only in the country, which is very limited in terms of the potential of entire market. People are having, if you go into the smaller towns, there are high net worth individuals in towns. I often see that they are investing. They've got a lot of investable surplus, but if you check with them, they don't invest in mutual funds. They are investing somewhere else. They are putting money into the insurance. They are putting money into the banks and real estate. What stops them? What is one major hurdle which actually is stopping this exponential growth of mutual fund industry? We are seeing a gradual growth. It's a SIP driven growth, like systemic investment plan growth, but the kind of potential we have, what is stopping them to come to the mainstream? I think nothing stops them. I think मेरे हिसाब से जो जानकारी which they have to focus on, that something is gradually shifting towards understanding mutual fund investing and its impact in the long run that can give. I think that's something definitely is improving. Even our own case, we had 20 lakh folios about 6 years back. आज के दिन पे we have 80 lakh folios. Yes. Your new customer addition that we added as a fund house, almost in the range of about 30 lakh new customers we added last 6-7 years. New customer addition is coming in. For the industry as a whole, you mentioned about 3.5 crore unique investors. Yes. Households के हिसाब से देखते हैं, अगर पूरा देश में households, investable households के हिसाब से देखते हैं, 30 crore households are there which can invest in mutual fund. That means आज के में 3.5 crores unique customer है, that can go up to 30 crores customer base. It can go next 10-15 साल में हो सकता है actually. Yes. I think what could be stopping them actually the field what they get by investing in say real estate. Yes. They're investing in gold. Okay. And even investing in fixed deposits, sleepy money I call it. Yes. So मेरे हिसाब से investors start realizing that I have money lying in real estate, huge assets lying, and bank deposits maybe huge money is lying. But if I understand the power of compounding that come in equity over a period of time, power of compounding Yes. is the biggest advantage of mutual fund in the long run पे. I think if you take that as a principle, Yes. मेरे हिसाब से investors का धीरे धीरे करके they will start coming into mutual fund, and which in my view is not something which is far away. Coming to the regulations, do you think that industry is now getting over-regulated? There's a lot of questions coming from the mutual fund industry in terms of the SEBI's intervention, putting conditions for selling of the mutual fund, declaration. Now the new debate which has started, like charging more for direct funds from the regular. जब regular से हटा के आप direct में भी ले जाएंगे, वहाँ भी पैसा देना होगा, तो who is gonna get out of it?
this entire thing, how do you see that? Because everything mutual fund industry does, but that's the beauty of the industry. Everything what is happens to the mutual fund industry finally comes back to the investors. Whatever happens here, investor have to pay for that. Whether you are moving from regular to direct, whether you are changing the TER, whatever you are putting at that. So how you see these regulatory interventions coming right now? Whether they are gonna make a mutual fund holding and investment cheaper and cost effective for investors, or do you see that in next 3 to 4 years the cost of buying mutual fund will go up in terms of these regulatory changes? I think interesting. Regulatory roadmap I'm thinking the last almost 25 years. As the industry becoming bigger and bigger, regulation also keeps evolving. Yes, sir. But a regulation keeps evolving, or every time they revisit the regulation, it is the interest of investors. As rightly said, Yes, from investors' point of view, the cost of buying a mutual fund has to come down over a period of time. Therefore, whatever step that has been taken all these years by the regulation, it is in the best interest of investors. Second, as industry size becoming bigger, today we are managing industry as a whole 45 lakh crore size. We as a mutual fund manage about 3 lakh 27 crore size. IIFL mutual fund size 3 lakh 27 crore size. As the size becoming bigger, the जिम्मेदारी हिसाब से जो पैसा manage करना है is also rises. Therefore, उसके लिए some regulatory intervention comes. It be seen as if it's an over-regulation. But मेरे हिसाब से every regulatory changes come. It is intended to provide the best outcome for the investors, to control the people who are operating in the market. For example, we all can get swayed by market emotion. See, as a money manager, we are all human beings at the end of the day. We can get carried away with market emotions, market fluctuations, what's happening around the world. We may react very rapidly at times, which may not be in the best interest of investors. Portfolio constructions can go pointedly haywire. We cannot happen only in the best interest of investors. Therefore, the regulation जो है is all in the best interest of investors. Is also in best investors, players like mutual funds and the distributors and advisors. Is in the best interest क्योंकि 40 lakh size अगर 100 lakh crore size हो गया the next few years में, एक बड़ा होने के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. Therefore, the beauty of mutual fund industry is regulation में is something keeps evolving after every 3-4 years, which can actually sustain the growth of the industry for long term. At the same time, जो practice जो करते हैं, risk management जो करते हैं, practice जो करते हैं money management में, service में जो practice करते हैं, investor को जो अच्छा experience देते हैं, that experience also remains good forever. उसके लिए जो regulatory change जो आते हैं, कभी-कभी of course any change in regulation, कभी-कभी लगेगा actually that थोड़ा over regulation, कभी तो pain होगा मेरे हिसाब से. All of us feel the pinch at times. But I think we have to look at from a different angle. क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, and ये दूसरा एक mutual fund industries में एक बड़ा advantage है actually. I am a firm believer regulatory changes आज तक जो देखा है is all driven by mutual fund industry players behaviors practices. वो basis में investors behaviors distributors behavior practices वो basis में और क्या करना है regulation में in order to ensure those practices become better and better. So that is the way I think I see the regulatory changes evolving and will continue to be like this even going forward. So industry is growing, regulatory environment is improving, and investor education is lacking. It looks like that a lot of people, when as a journalist, when we interact with the people, हम show करते हैं, लोग उस पर सवाल पूछने आते हैं, we find that they are willing to invest, but they still does not have the kind of information given to the industry. And since industry is focusing on innovation of the products, more and more innovative products have started coming. Every day we see new products are coming. Somewhere the basic investors of the mutual fund who was looking for a less risk profile investment, their investor education levels are still low. Do you think that what more required to be done in terms of the regular SEBI and Mutual Fund Association MFI in terms of educating investors, especially the investors which are not exposed to the financial world? No, it is happening. I think it's evolving on a continuous basis. Education is something we started in the 2012, and each year if I see, we are only making good progress. Right from moving from physical engagement, creating awareness to the mutual fund investing, to digital engagement. Today the entire social media platform also helps. Money9 kind of your own platform is focusing on educating investors. That something is my view is evolving over time. I think a lot to be done. But what is also happening is the पहले जो focus था, that is focusing only on
big market like Mumbai, Delhi, and only the top cities, अभी cities से निकल के smaller towns and smaller towns में भी investor education जो आज के समय जो हो रहा है, we call it B30 cities in mutual fund terminology में, and that is also is growing. Mutual fund distributors जो पहले जो small market में पहले नहीं आते थे, उनको भी जो मन है actually mutual fund काम करने के लिए वो भी हो रहे हैं. मेरे हिसाब से ये education levels are rising, but more initiatives that are being taken by AMFI, individual mutual funds, working closely with Money9 kind of platform in increasing the reach and breadth on investor education. मेरे हिसाब से this will continue. मेरे हिसाब से this should be seen as an opportunity for the industry to grow. Why I'm asking this question, because since the mutual fund industry's investor education initiatives are good, but whether they are reaching to the masses or not, it has to be seen. There are a lot of influencers came, and then there's a misinformation, misguidance started coming. SEBI को बीच में crack down करना पड़ा. तो a structured education to the investors, rather than people who are coming and advisors coming, which are fin influencers suggesting you something without understanding, is that. So that looks like there's a gap in between, and that's the reason these fin influencers came, and then SEBI has to intervene and stop them not giving advice to the common investors. Correct. This is where the vacuum lies, and this is a lot of complaints in the market against these fin influencers. They have advised, people have bought something and they finally didn't know that where to go. Correct. So here you think that the SEBI and industry has to be more proactive in terms. No, we actually do have some, since I am also AMFI chairman right now. That's the reason I asked you. The influencers wrongly influencing investors by giving some information which are not relevant or not in line with the regulation. The regulation may be आज के दिन पे even SEBI closely watches this. AMFI as a body we closely watch, and wherever we find such wrong influence being done by social media influencers, we write to them. We take it up with them, and we tell them to take actions. And we have seen many cases where misleadings happen or misinformation has been given, the videos have been even withdrawn. That moment it's brought to our notice, we do it. And we also have a system of vigilance. Both in SEBI as well as in AMFI, there is a vigilance system who keeps track of all such trending pattern in the social media platform. They are being taken up, assuming it comes on Google platform, we take the Google. If it is coming in the Facebook platform like Instagram, we take the Facebook. And we ensure such influencers do not unnecessarily gain mileage by spreading wrong information. This is of course something will go on ongoing basis. Second is, we also of course educate people through the same platform, whom to listen and whom not to listen. So that's also something which you do. I think in the very fact that Money9 kind of platform we get involved, these are all credible platform from investors' point of view. किसको सुनना है, कैसे सुनना है. This is also something is duty of us to tell them actually. That's also something we do at times through the advertisement, through engaging regional platform for creating this message and so on and so forth. This मेरा हिसाब से whatever sudden and there are a lot of youngsters highly enthusiastic, inspired by something they see somewhere, and they are of course will put something which they think is right. But I think vigilance, being vigilant and addressing these issues with the right mindset is something which we believe we should have the capability. आज के दिन पे वो हम लोग करना शुरू कर दिए. So before coming to the rapid fire round, just one last question, and then we'll have some quick 2-3 questions. You see, the history of India's saving behavior has been strongly promoted by tax incentives, either or giving better return by the government from the exchequer. This is the way India's saving environment has evolved since 40s and 50s. First government has started promoting savings, created special saving schemes from the taxpayers' money has been used. There's a lot of interest, high interest rate has been given, and then the investment has been promoted by the tax incentives for them. That what stops government to providing tax incentives to this rising financial security part is that which is completely left out from the tax planning, and government whatever available opportunities are there are getting tax. Do you think this is the biggest hurdle? If the government will come up with some kind of tax incentives for the mutual fund industry, people will move from industry. What stops them? What is there? See, मेरे हिसाब से जो आज के दिन पे the tax structure is there mutual fund invest करने के लिए basically on equity mutual funds 15% is the short term capital tax, 10% is the long term capital tax. पहले 0 था, now become 10%.
एंड एनी अदर कंपेरिजन यू डू ऑन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप कोई भी एफ डी आप ले लीजिए, एफ डी यू चार्ज 30% टैक्स, नॉमिनल टैक्स रेट्स, गो टू रियल एस्टेट and you have same taxations. Whereas the mutual fund, it gives you liquidity, it gives a certainty of your money being safe in the long run, तो आपको वेल्थ इफेक्ट भी उसमें आ जाते हैं. अगर तीनों को मिलके आप देखते हैं 10% टैक्स दैट यू हैव टू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स इज नॉट टू हाई, एंड दिस समथिंग माय व्यू विल रिमाइन. मेरे हिसाब से द इंडस्ट्री डजंट नीड टैक्स इंसेंटिव. इंडस्ट्री नीड्स टू ओनली बिल्ड ऑन द बेस ऑफ जो लास्ट 30 साल से द वे इट हैज जनरेटेड वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर्स, or maybe the way given experience to the investors across the mutual fund industry. That's something if you're able to establish, build a credibility of this, keeps going up each year. मेरे हिसाब से that itself will bring in more investors in the mutual fund platform. मेरे हिसाब से tax incentive, the जमाना था पहले that unless you incentivize people will not come. आज के दिन पे उसका मेरे हिसाब से जरूर बहुत कम हो गया है. Therefore we don't need to sell mutual fund on the basis of tax incentive. Tax is actually a little bit additional will come. But in tax के अलावा the return that comes out of investing yes. is actually far higher benefit that they get. Therefore, that is what investors have to look at, not the little bit of tax benefit that you get basis which you try to generate alpha. This is something, in my view, is not necessary. But government can of course encourage platform like mutual fund. It has done good for the country because जो पहले के ज़माने में था that as a country we used to depend on FI investments in India. Today, the mutual funds have been the large investor in mutual fund in the capital market. Therefore, the public savings capital markets आने से उसको जो फायदा जो हो सकता है both for the investors and country and for employment, I think is large. Therefore, one area where they can definitely incentivize the people to the tax structures is to how to build mutual fund distribution community. So, आज के दिन पे जो investors जो base जाया उसके हिसाब से जो number of investors who have to be advised, handled, as the size of the investors will keep increasing. मेरे साथ जरूरी है actually to increase the mutual fund distribution community, advisor community in the long run. अगर दोनों साथ साथ में चलते हैं मेरे हिसाब से that is more than enough rather than giving tax incentive. चर्चा के आखिरी सत्र में मेरे पास साथ भारत के सबसे अच्छे फंड मैनेजर हैं और जो हमारे सारे दर्शक जो मनी9 को देखते हैं और म्यूचुअल फंड पर सैकड़ों सवाल पूछते हैं, उनके लिए मैं अगर बाला सर से कुछ टिप्स ना लूं तो बेहतर नहीं होगा इस पूरी चर्चा में. इसलिए मैं 3-4 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा जो हमसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पूछते हैं और उनका जवाब बाला सर देंगे. तो पहला सवाल सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से पूछता है कि उसे सब पोर्टफोलियो देखना चाहिए या फंड हाउस? मेरा से फंड हाउस देखना चाहिए बिकॉज फंड हाउस इज द वन गिविंग लॉन्ग लास्टिंग नेचर ऑफ द बिजनेस. दूसरा सवाल ये कि किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का रेशियो क्या होना चाहिए? मेरा साहब सब कुछ लॉन्ग टर्म होना चाहिए. सब कुछ लॉन्ग टर्म होना चाहिए. तीसरा सबसे सवाल है, म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने का सबसे सही टाइम कब होता है? एग्जिट कभी होना ही नहीं चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, एग्जिट का सवाल नहीं उठता है. कभी भी एग्जिट नहीं करना चाहिए अनलेस यू नीड द मनी. ओके, थैंक यू सर. तो 3 बड़े सवाल, ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को देखें या पोर्टफोलियो को देखें, एग्जिट कब करें और लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में जाएं. ये 3 बड़े सवालों का जवाब हमारे पास देश के सबसे अच्छे फंड मैनेजर से आपको मिला. इस चर्चा में मनी मांग के इस विशेष सत्र में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बाला सर. और हम और भी जानकारियाँ लेकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की और भी विशेषज्ञों के साथ बात करके इस तरीके के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. बहुत बहुत आभार.